Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu from Aneja City Hard School. We will start the basic concepts of maths. In previous lecture, we have discussed the geometry topic lines, line segment and ray. In this lecture, we will discuss the geometry topic intersecting lines, parallel lines, perpendicular lines. Now, first topic is intersecting lines. If two lines have one common point, then lines are called intersecting lines. Which means अगर दो लाइंस में एक कॉमन पॉइंट होगा तो उन लाइंस को हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस. We will clear the topic of intersecting lines with the help of figure. In this figure, line L and line M has one common point which is A. We will clear this topic with the help of example. जैसे कि आपको पता ही है कि इंग्लिश का जो लेटर है X, उसमें टू लाइंस किस तरह की लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, बिकॉज these lines has one common point. Now next topic is parallel lines. Lines which do not meet are called parallel lines. It means lines which has no common point, then these lines are called parallel lines. We will clear this topic with the help of figure. In this figure, line L and line M has no common point and these lines do not meet at any point. And parallel lines are denoted like this. Line L is parallel to line M. This symbol is for parallel lines. Now example, opposite edges of scale. जैसे कि आपको पता ही है कि जो आप डेली रूटीन में स्केल यूज करते हो, जैसे कि ये, इसमें जो फर्स्ट एज है और सेकंड एज है, इसमें कोई भी पॉइंट आपस में मीट नहीं कर रहा और इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये किस टाइप की लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस. नेक्स्ट टॉपिक इज परपेंडिकुलर लाइंस. व्हेन टू लाइंस intersect and the angle between them is a right angle, then the lines are called perpendicular lines. Which means if two lines intersect at common point and angle between them is 90 degree, then these lines are called perpendicular lines. Figure of perpendicular lines is line L and line M has one common point and angle between these lines is 90 degree, which is right angle, and lines of perpendicular is denoted by this. Line L is perpendicular to line M and this symbol is like inverted T. Now in this lecture we have discussed the topic intersecting lines, parallel lines and perpendicular lines. Intersecting line कौन सी होंगी? जिसमें वन पॉइंट क्या होगा? कॉमन. और परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होंगी? जिसमें वन पॉइंट कॉमन तो होगा लेकिन उसके साथ साथ उनके बीच में एंगल कैसा होगा? 90 डिग्री. लेकिन पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा और ये लाइंस आपस में मीट नहीं करेंगी. आई होप सो आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू.